Okay, so good evening to everyone. We are continuing our course CEM 407 Wastewater Management, and in this course, we are having this lecture number 17 for the advanced treatment of the wastewater or sewage, right? In which up till we have discussed the oxidation pond and septic tank, right? So सेप्टिक टैंक हमने यहाँ पर छोड़ा था एंड हियर राइट वी हैव understood this theory of septic tank, right? We have generally two kind of compartment in this tank, right? इस तरह से हमने को डिस्कस किया था. स्लज फॉर्मेशन बॉटम में होता है एंड दिस स्लज को जो है फिर निकाल लिया जाता है. ठीक है, पर पोर्शन इस तरह से होता है एंड द लोअर पोर्शन इज लाइक दिस. Okay, this is the sludge collector or sludge tank. This volume of this is V2, and above the volume of this in which influent come and effluent from this tank will go out, that is V2, right? So V1 is equal to rate of flow of sewage. कैसे निकालेंगे rate of flow of sewage into detention time? Okay, जितना rate है और जितना detention time है उसका sewage का, and V2 will be the rate of accumulation of sludge. Okay, जिस रेट से स्लज जनरेट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है बॉटम में, मल्टीप्लाइड बाय द क्लीनिंग पीरियड. ओके, मल्टीप्लाइड बाय द क्लीनिंग पीरियड, उतना ही वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा जितना आपका क्लीनिंग पीरियड होगा. इट मीन्स दैट अगर क्लीनिंग पीरियड आपका बहुत कम है, मीन्स आप बहुत जल्दी जल्दी क्लीन करते हो, फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत अच्छी है, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड विल बी नॉट सो मच हाई, राइट? कम होगा. और क्लीनिंग पीरियड आपका बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बहुत लंबे टाइम के बाद आप स्लज क्लीन करवाते हो, then V2 value of V2 will be more. Okay, an effluent of the septic tank disposed in either in the soak pit or in the dispersal trenches. Okay, this is trenches, okay? Branches. I told this earlier, right? Percolation rate is defined as a required minimum by sewage effluent to seep into the ground by the distance of 1 centimeter. Okay, तो सीवेज को हमें परकुलेशन करवाना है ग्राउंड वाटर में, ट्रीट करने के बाद एफिलेट को. ओके, एंड टू दिस काइंड ऑफ थिंग में कॉल्ड एज सीवेज फॉर्मिंग आल्सो. And after this area of percolation field, how we calculate this area of percolation field, that equals to Q naught over Q star. Okay, Q naught is the rate of the wastewater coming, right? And what is the Q star? Q star is rate at which wastewater is generating. वाटर सप्लाई जिस अकॉर्डिंग होगी उसके द्वारा जितना भी सीवेज जनरेट होगा, दैट इज क्यू स्टार. ओके, लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल so you will be a clear understanding, right? Estimate the size of septic tank having the length to width ratio of 2.25. okay, एक सेप्टिक टैंक डिजाइन करना है, उन्होंने दे दिया है L/B रेशियो इज 2.25 and liquid depth of 2 meter. okay, थोड़ा जूम कर लेते हैं. liquid depth is 2 meter, right, with 300 mm free board. okay, the extra 0.3 meter we will provide in height. okay, that is we'll see later. Liquid depth means water level depth is 2 meter. Also calculate the desludging interval in the year. means desludging मतलब cleaning interval, जिस cleaning की हम बात कर रहे थे, है ना, that is depend upon the V2. and total trench area in the meter square. Trench area मतलब percolation field area. okay, of the percolation field for the small colony of 300 people. Only 300 people are the living in that colony. That for that colony we have to calculate the percolation area or that area, right? Sludging area. Assume the water supply is 100 liter per capita per day. Water supply is 100 liter per capita per day, and sludge production rate is 0.04 meter cube per capita per year. okay, sludge production rate is 0.04 meter cube per capita per year. okay, Q naught is based on this sludge production rate, and Q star is based on this sludge production rate 0.04
and the Q naught is based upon this 100, right? So मैंने बताया था अगर 100 वाटर आपका सप्लाई आ रहा है तो उसका हम नॉर्मली 80% मीन्स 0.8 टाइम्स ऑफ दिस 100 we are considering will come out as sewage. 80% ऑफ दिस 100 विल कम आउट एज सीवेज, मतलब 100 लीटर अगर पानी आपको सप्लाई हो रहा है तो 80% विल टर्न इनटू दी सीवेज, ऐसा हम एज्यूम करते हैं अपनी कैलकुलेशन में। ओके, तो अगर हम डिस्चार्ज निकालना है क्यू नॉट तो निकल जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाइड बाय दी 300 पीपल है ना, पर कैपिटा है तो 300, दिस विल बी इन लीटर, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी इन मीटर क्यूब पर डे, राइट। और दे इसमें अगर हम 80% हम लेंगे तो दिस विल बी द आवर एक्चुअल क्यू नॉट फॉर दी सीवेज, राइट। तो दिस विल कैलकुलेट दिस है ना। डिटेंशन टाइम फॉर द सेप्टिक टैंक इज 3 days. Desludging is done in tank is 1/3 of full of sludge. Okay, desludging volume. Okay, the second thing is desludging volume. मतलब वो कहना चाह रहे हैं that V2 is 1/3 of V1. जो desludging volume है, sludging का जो volume है, that is the 1/3 of the main tank volume. Okay. Okay, so this is the perforation test indicate allowable hydraulic rate is 100 liter per meter square per day. Okay, this is Q star. Okay, fine, this is our Q star. Okay, so what will be the Q naught? Q naught is equal to 0.8, 80% होता है ना, 100 लीटर इंटू 300 पीपल फॉर पर कैपिटा, तो दिस विल बी अवर क्यू नॉट 24 मीटर क्यूब पर डे। एक दिन में जो है इतना 24 मीटर क्यूब वाटर सीवेज की जो है टर्म में हमको मिलेगा। ओके, बट विद द Q1 सॉरी V1, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ दैट, यही वॉल्यूम ऑफ दिस अपर टैंक विच ऑक्यूपाई this much rate. Okay, so this V1 is equal to Q naught into detention time, जितना टाइम हमको उसमें रखना है, तो detention time is given to you 3 days, right? So V1 will be 24 into 3, 72 meter cube. 72 meter cube volume is required for this tank. Okay, what will be the V2? नीचे का जो टैंक है स्लज टैंक जो है स्मॉलर वन, उसका वॉल्यूम क्या होगा? दैट विल बी द V/3, राइट। सो total volume, this V/3 we can write here V/3 plus 72 equals to V, मतलब we are writing just actually V1 plus V2 is equal to V. Okay, so we have 72 V1, so V2 क्या हो जाएगा 72/3. Okay, so this will be okay, so V1 plus V2 equals to V, right? So V1 is V/3, total V/3, and V2 equals to 72 equals to V. So from this we will calculate the V. Total V is equal to, is coming out as 108 meter cube. Okay, so what is the V2? V2 is there is a mistake. Okay, printing mistake. This is not V1. This is completely V. Completely V is the V1 plus V2, राइट। इसमें सीवेज इनफ्लुएंट सीवेज आएगा एंड V2 इज द स्लज टैंक बिलो लोअर वन, राइट। तो समेशन जो है V, तो टोटल V का थर्ड होगा हमारा V2 होगा, ठीक है। सो V ऐसे कैलकुलेट करना है हमें, V/3 प्लस दैट V2, V1, this is V2, this is V1 equals to V. Okay, so V is coming as 108 meter cube. So what is the V2? V2 is V/3. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ V2 equals to V/3. Okay, this will be 36 meter cube. Okay, तो ये आप ध्यान देना कि V2 equals to 1/3 of V है, not V1. Okay, 1/3 of V. Correct this. Okay. With the septic tank effluent carry undigested sludge with it, so efficiency decreases as BOD increases. Okay, ये एक theoretical note लिखा है यहाँ पर, अगर BOD increase करता है तो efficiency will fall down. Okay, just ignore this. You can ignore this. You can read it also. So what will be the volume of complete? That is the LB into H. So L by B ratio is 2.25 is given to you. Height is 2 meter is given to you, right? So 108 equals to 2.25 B into 2. So width is coming 4.89, L is coming 11 meter, H is coming 2 meter. Okay, all dimension of the complete tank we got. Okay, freeboard 0.300 mm means 0.3 meter we will provide. Okay,
what is the V2 now? V2 is the rate of accumulation of sludge. V2 sludge digestion tank जो लोअर वन है उसका है, तो ये कैसे निकलेगा? रेट ऑफ accumulation of sludge into desludging interval, राइट? तो कितना desludging interval ये हमें कैलकुलेट करना था. V2 हमें पता है. The rate of accumulation of sludge. Rate of accumulation of sludge is 0.04 into 300. How this is coming? Let's see. We have given this 0.04. There will be somewhere here. Yes, sludge production rate is 0.04 meter cube per capita per year. So sludge production is per capita per year. Capita is 300 people. So कितना sludge meter cube per year बनेगा? That is 0.04 into 300. Okay, and this is the in meter, and this is also in meter per year. Okay, so this will come in the year, right? So if you calculate this, there is some kind of mistake here. It will come that 36 over 0.04 into 300 will come 3 year. Okay, so now we'll calculate the area of percolation field. So what is the area of percolation field? SA is equal to Q naught over Q star. So what is the Q naught? 24, right, meter cube per day, or if we will convert this into liter, the 24 into 10 to the power 3, and Q star is the 100. Okay, Q star, it is given last line that question that yes, here perforation test include allowable hydraulic rate is 100 liter per meter square per day. That is in liter. Okay, so that's why we are converting our 24 into liter. So 24 into 10 to the power 3 over 100, it is coming 240 meter square. So whatever the population field we will provide, that is around, that must be 240 meter cube, 240 meter square, sorry, area, that is in square. Next, two unit we'll study. The one is the EMOF tank, another one is a USB reactor. Okay, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, just एक ओवरव्यू लेते हैं इनका. Okay, then we will see in the assignment. I will give assignment and just solve this. Just understand these two topics: EMOF tank and USB reactor. Okay, I'll give you an assignment, right? But for however we are going to touch this topic. Okay, थोड़ा हम brief में इसको देखते हैं. EMOF tank modification over the septic tank in which incoming sewage is not allowed to get mixed with the sludge. Okay, modification over septic tank means septic tank जैसा हमने भी पढ़ा है, it is almost conceptually as same as septic tank. Okay, but there is a modification, okay, in which incoming sewage is not allowed to get mixed with the sludge produced, and outgoing effluent is not allowed to carry undigested solid along with it. वो कह रहे हैं there are some kind of a certain EMOF tank means has EMOF कौन होता है ना, EMOF tank, this kind of tank we are providing, and we have some arrangement like this कि इन्फ्लुएंट जो आएगा वो प्रॉपर अलग रहेगा इधर से. स्लज जब एक एक्यूमुलेट हो जाएगा, स्लज जनरेट हो जाएगा, तो एफ्लुएंट जो वापस जाएगा वो एफ्लुएंट क्लीन जाएगा, उसमें अनडाइजेस्टेड स्लज नहीं जाएगा. इट विल अनडाइजेस्टेड स्लज विल फॉल डाउन एंड इट विल accumulated in the bottom, okay, of the tank. Okay, and what they are saying, incoming sewage is not allowed to get mixed. Incoming sewage जो है further it will not mix, there will no chance that it will not mix the influent sewage with the our sludge. जो भी हमारा sludge यहाँ पे accumulate हो चुका है उससे ये अभी दोबारा mix नहीं होगा. There are certain arrangement like this, and continuing we are removing this sludge from here to here so that it will not further mix with our effluent, right? ये modification थोड़ा सा EMOF tank का किया है, but although it is anaerobic digestion process and it is similar to the septic tank. Okay, it is a two-stage storage tank in which the sedimentation is carried out in the upper chamber and digestion is carried out in the lower chamber. Okay, मैंने ये बोला upper one is इसमें sedimentation हो रहा है, okay, whatever is the suspended solid, and lower chamber में अब क्या हो रहा है, sludge digestion process हो रहा है. ठीक है, तो there are two separate chambers. Okay, okay, ये देखिए यहाँ पर फिगर इसका दिखाया हुआ इस तरह से. This is the X section, this is the cross section. Okay, तो this kind of EMOF cones are provided. Okay, जिस तरह से ये pipes are kind of the provide करते हैं, जिसमें से यहाँ पे जो है
ये स्लज आपका एक्यूमुलेट हो जाता है, डाइजेस्टेड चैम्बर है और दिस इज सेपरेट, सो देयर इज नो हिंड्रेंस ऑफ which is for the effluent which is coming out, which will coming out through this digested sludge. Okay, तो कोई इसमें इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, दैट इज द सेपरेट वन, द एफिशिएंसी will increase. Okay, next is UASB reactor. Okay, it's also anaerobic suspended unit of this waste water treatment. ठीक है, इसमें उसमें दो चैम्बर होते थे, इसमें एक तरह के तीन सिस्टम होते हैं, थ्री सेपरेट काइंड ऑफ प्रोसेस होती है, जिसमें एक तो आपका नीचे एक्टिवेटेड स्लज होता है विच इज हैविंग द एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें जब ये डाइजेशन होता है तो एक गैस रिलीज होती है, द गैस विल कैरी दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अबव। अब ये ऊपर आने वाले जो रॉ सीवेज है, रॉ वेस्ट वाटर है, उसके साथ मिक्स होगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, फर्दर गैस रिलीज होगी, दैट गैस विल means take some kind of suspended solid or some kind of oil scum layer with it, and it will accumulate here, and that layer of oil scum and some kind of the organic matter act as the blanket. Okay, this is a layer, isko blanket we carry, it is a layer. Okay, and this gas will come out, and we will collect this gas here. Okay, this kind of distribution system are there in which the raw sewage is spreading. ओके, एंड एक्टिवेटेड स्लज जो है नीचे, वो आपका डाइजेशन, वो आपका एक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म जो उसमें है वो आपका डिकम्पोजिशन कर रहा है, डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का हो रहा है, बट इट इज क्लोज कंटेनर, सो इट इज प्योरली एनारोबिक, कोई इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है. ओके, लेट अस रीड 1-2 पॉइंट. In this process, the wastewater is passed through the layer of activated sludge in vertically upward direction. Okay, vertically upward direction में इसमें sludge जा रहा है, due to which microorganism present in the activated sludge carries out the decomposition of organic matter present in the wastewater. Okay, जो भी organic matter present है वो activated sludge में जो भी microorganism है वो उसको decompose करेंगे, और that will जब decomposition होता है तो आपको मैंने बताया था biomass will produce, and that along with that biomass some gases may produce. Okay, CH4, methane, that gases is very helpful. Okay, those gases are called as biogas, you know, we have some kind of biogas reactors also, so we will collect these gases from here. Okay, as no mixing is induced in this process, three-phase separation of the consequent process will take place here. Okay, this method is suitable for the treatment of both soluble wastewater and the wastewater having particulate matter. Okay, solubles भी और इसमें जो भी particulate matter है, दोनों के लिए ये मतलब ये जो है बेनिफिशियल है, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर होंगे तो ब्लैंकेट जल्दी फॉर्म होगा, ब्लैंकेट जल्दी फॉर्म होगा तो एनारोबिक रिएक्शन आपकी अच्छे से डेवलप होगी, और एनारोबिक रिएक्शन जितनी अच्छे से डेवलप होगी उतना इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. ओके, सो नेक्स्ट इज द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक. ओके, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक ये बेसिकली पार्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बट वहाँ पे हमने नहीं देखा था, तो वी आर जस्ट रीडिंग सम पॉइंट हियर. प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस एसिड इज टू प्रोड्यूस एफिलेंट. ओके, एक अच्छी क्वालिटी का एफिलेंट प्रोड्यूस करना, जो भी टिकलिंग फिल्टर से पीएसटी से आ रहा है वो इसका काम होता है. ठीक है, एक्टिव स्लज से आ रहा है, फर्दर वो इसका काम होता है एरेशन वगैरह होने के बाद. ओके, दैट इज द सफिशिएंटली क्लैरिफाइड एंड concentrate the sludge formed in it so as to reduce its volume to be added in the plant. Okay, sludge भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, एंड sludge जो है sludge digester में सेप्टिक टैंक में चला जाता है, वहाँ से sludge digester में चला जाता है, तो जो quantity that organic load will also reduce, BOD will also reduce. Okay, so what they are talking in this first point. Next, the secondary sedimentation tank is designed for both the surface overflow rate like PST and solid loading rate. Okay, organic loading rate. Okay, like tickling filter. There is an area of these tank computed using the average value of both overflow rate and the solid loading rate, and maximum area is computed adapted, which is further used to check the peak value of the both overflow rate and solid loading rate. Okay, तो मैक्सिमम एरिया जो है वो दोनों के बेसिस पर चेक करना होता है हमें, दोनों का एवरेज हम ले लेते हैं कई बारी, तो वही बताना चाह रहे हैं. ओके, like PST or like tickling filter, we are considering the like PST we are considering the surface overflow rate, and we are like tickling filter we are considering the organic loading rate. Okay, यहाँ पे वही चीज़ हम मेंशन कर रहे हैं मैथमेटिकली. To compute the surface area, I have two parameters, there is the OFR and SLR.
Okay, so surface area will calculate by the Q naught over OFR, okay, overflow rate, and SA may calculate by the Q naught into X over SLR, solid loading rate या organic loading rate. Okay. एक ऐसे which is maximum by assuming the value of OFR average and SLR average. Okay, ऐसे जो maximum आ रहा है, maximum area required है वो हमें लेना होता है basically. OFR peak with the Q peak over SA max and SLR max is equal to Q peak over SA max. Maximum निकालना है तो discharge में आपका peak discharge आपको लेना पड़ेगा. Okay. Once you get this surface area maximum, and then you will easily calculate the diameter. If you know the tank is more or less circular in shape, so SA will be equal to the pi by 4 d square. Okay, diameter निकल जाएगा. How we will calculate the height? Height is the volume over the surface area. Okay, how we will calculate the volume? Volume is equal to discharge into the detention time. Okay, but the detention time, detention time, that we'll know later. I'll tell you after this. Okay, so this is the standard table. Here secondary sedimentation tank of SST, type of SST, 1, 2, 3, three types. For these three types, we have the overflow rate, average and peak both, and we are the SLR also, solid loading rate, average and peak both. Standard depth as per these SLR and OLR here, and detention time also we can see here for the all three different cases. Okay. So SST after TF, TF means trickling filter. Trickling filter के बाद SST आपने अगर लगाया है, then your overflow rate will be average 50 to 25. Okay, peak will this, and SLR value will be the 70 to 120. Okay, and depth must be in between 2.5 to 3.5, and detention time will be 1.5 to 2 days. Detention time is constant. Although SST after the ASP, SST after the activated sludge process. Okay, this is almost similar, everything is almost similar. The depth you are increasing. Okay, SST and extended aeration tank. Okay, extended aeration, then your overflow rate is bit less. Okay, and obviously peak also will be less, सॉलिड लोडिंग रेट ऑल्सो लेस, क्योंकि जब आपने टेक्निक फिल्टर एसपी यूज कर लिया तो आपका पीओडी काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है. ओके, काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है, तो आप ज़्यादा ओवरफ्लो रेट या और ज़्यादा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट यू कैन accommodate, you can go for the higher one to treat in SST. But if you are not using tickling filter and ESP before this SST, like in third case, so you have to go for this value little bit lower. Okay, solids in the secondary sedimentation tank are considerably light in weight and hence are significantly affected by turbulence and current of this outgoing effluent. Okay, so लाइट वेट होता है काफ़ी, क्योंकि स्लज डाइजेस्टर में हम स्लज वगैरह भी रिमूव कर देते हैं. ओके, in order to prevent the loss of solid out from the tank, sufficient length of the overflow weir is to provide a long circumference of the tank of the top. वियर प्रोवाइड करनी पड़ती है. वियर इज अ काइंड ऑफ नैरो रीजन जहाँ से हम चाहते हैं कि एक लिमिट क्वांटिटी ऑफ वाटर वो जो है सप्लाई हो. एक हाइट देते हैं हम पानी को ओवर पास करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वियर, है ना. जैसे वियर और बैराज में आपने सुना होगा दैट यू विल स्टडी इन इरिगेशन इन 6th semester I think, the weir and barrage. Okay, so that kind of structure proportionate weir you may provide. Okay, एक वाटर को आगे एफ्लुएंट को पास करने के लिए. SST hence after having the design also checked for the weir loading rate. So we are providing the weir, so you have to check for the weir loading rate. Okay, no issue. Weir loading rate for the SST after ASP is 185 meter cube per meter per day. Okay, and for SST after technical filter this, the weir loading rate भी आपको given standard इतना लेना है. Okay, we'll see this next lecture, domestic solid waste, right? Waste, type of waste, type of disposal methods. We'll see in this next lecture. Thank you.